Okay, today we will discuss error analysis. Okay, error analysis in plus 2 science students, those are reading. Okay, जो मैंने plus 2 science पाठ पढ़ुचा से मोर फर्स्ट चैप्टर टा बोले यूनिट एंड मेजरमेंट से चैप्टर रे गोटे एरर एनालिसिस अछि. ओके, ता विषय मु अल्प किछि तुमको डिस्कशन करबी. ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हला बुझिबा चेष्टा करिवो हला. देन also you like and also share and also subscribe and you give your comments, then definitely I'll try to improve my videos. Okay, please attention. Error analysis in error analysis in error analysis first we'll discuss what is error. Error माने कौन गोटे भूल. सपोज मु कहबी गोटे रेक्टांगल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर. राइट, रेक्टांगल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर. बट तुम जो 5 सेंटीमीटर एक्चुअल सपोज एक्चुअल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर. राइट, एंड एक्चुअल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर. बट गोटे पिला कहला जे नाइ सर मु मेजर कली लेंथ मु आसला 5 पॉइंट समथिंग, सो प्लस और माइनस. So length है तो length is equal to actually is 5 centimeter, breadth is that is 2 centimeter. Right, but it actually length असला 5 ने the 5 plus or minus 0.5, breadth असला that is not 2 plus or minus 0.2. Okay, so एटा हला तमरो length रे जते ओरिजिनल वैल्यू प्लस और माइनस किछि एरर आसला होय त प्लस 0.5 एक्स्ट्रा आई पारे किमा कमी जाय पारे. दैट इज एरर. जो मिस्टेक ता हला एटा केते एक्स्ट्रा, सो दैट इज मे बी 0.5 अधिक बढ़ी गेला नले 0.5 कमी गेला हला. तो क्या का पॉज बढ़ी गेला का कमी गेला ए बडा वैल्यू आसला तो एरर आछे प्लस और माइनस 0.5. सेमते ब्रेड्थ वे 0.5. तो ए जो लेंथ एंड ब्रेड्थ रा एरर आसिला मोर क्वेश्चन आसीबो जदि लेंथ रे एरर आसिला ब्रेड्थ रे भी एरर आसिला ताहाले एरिया रा एरर टा केते आसीबो. This is your question. Okay, so in this cases, so area here, area is equal to 5 into 2, that is equal to 10 cm square. So that is 10 cm, that is cm square. Okay, so unit accordingly you have to put the unit, but I only will discuss the error part, only the value, magnitude. Kete magnitude ta asu, tara error ta kete difference asu ba changes kon asu, right? So when you are putting the values, original values already given that to you. When original value is given and according to as per your measurement, so you got some errors, some plus or minus error you got. When you got that error, then length is changed, breadth also changed, but finally that area also changed. When area changed, then how much area changed? How much area error? Error in length, error in breadth. So finally when you are getting the area, how much area changed? That means error in area. Area रे केते error आसिला. यदि length रे error किछि आसिला, breadth रे error किछि आसिला, then area रे केते error आसिबो से कथा हमें देखिबा. तो ए जगह रे जदि मु length लिखिबी, so here area A is equal to 10, but here A is equal to what? A plus delta A. So that A plus delta A, that is A dash. Here only A. So that A plus delta A, area A plus delta A plus delta A is equal to what? That is length L plus delta L into B plus delta B. So that one is L, that is L plus delta L, and that is B plus delta B. L is the L plus delta L. So L is your original length. Okay, delta L, that is plus or minus changes the error. L plus delta L, new length. Breadth plus delta breadth, that is B plus delta B. Right. So L plus delta L, B plus delta B. So look at here. Length and breadth, this one is with error. This is original. This is your what? Length plus breadth, that is with error. This is also with error. Okay. Now new error you can find out here, that is
A plus delta A plus delta A, that is equal to what? You can multiply here L into B plus L into delta B plus B into delta L plus delta L into delta B. Okay. So now here area A plus delta L, delta A, then that is L into B. L into B, already you know that is equal to what? L into B, that is A. Then plus delta into delta B, sorry, A into delta B, sorry, this is L into delta B, L into delta B, B into delta L. Okay, this is L into delta B, B into delta L. Okay, B into delta L, then delta L into delta B. So finally here A cancel. Now delta A, that is error, change in error. Delta A is equal to what? L plus, sorry, L into delta B plus B into delta L. Okay, it's very important part. Now dividing both sides by A. If we will divide by A, that is why I am doing this. मेरा कहीं के A by A कली ना यार प्रोसेस अच्छी यार कैलकुलेशन अच्छी केमिति डेल्टा A कैलकुलेट करिवो. ओके, तो सच्चे में हमारा असला A स्टेप रे कौन असला ना that is delta A by A is equal to L into delta. So next I can write here delta A by A is equal to L into delta B by L into B. Here A means L into B plus B into delta L by L into B, then plus delta L into delta B by L into B. Right? Now look at here. This is delta A by A, delta A by A, then the L cancel, delta B by B plus delta L by L, B cancel, plus this error is what? That is 1 by A. LB means into delta A. 1 minute. Okay. Better write like this. 1 delta L by L into delta B by B. So delta L by L into delta B by B. This is what? This fraction. देखो what a small fraction. मुझे कभी 1/2 into 1/4. तार वैल्यू टा बहुत बढ़ी जो नहीं खाली 1/2 थिला पुणी अगेन इंटू मल्टीप्लाई है 1/4 ताने फाइनली 1/8 बहुत कमी है हला नेग्लिजिबल हो गला मतलब बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो सेटा को नेग्लेक्ट कर दिया गला ए वैल्यू टा तो फाइनली डेल्टा A by A is equal to delta B by B plus delta L by L. Okay, so finally equation you got this one. So in our question actually I should put the formula directly. मु एटा को ए क्वेश्चन रा डायरेक्ट फार्मूला पकई करथांते किंतु कोन हला ना मु फार्मूला को प्रूफ कर देली एटी 8 यदि इनटू केस थिबो एबडा केस रे केमते फार्मूला तमरो इनटू टा को प्रूफ होई के एटी बाहरिबो. ओके, तो हमें से फार्मूला पके दो एटा डेल्टा ए मागी जेठी. ओके, तो डेल्टा ए बाय ए केते 10 is equal to delta B केते प्लस माइनस what 0.5
डेल्टा बी बाय बी बी केते 5 ना बी सॉरी रॉन्ग वैल्यू दिस इज प्लस और माइनस 2 plus or minus 0.2 delta b by b means what, that is only 2, then plus delta l means plus or minus 0.5 plus or minus 0.5 okay divided by 0.5 divided by delta b divided by l means that is 5, right? So by calculating this one you have to find out the delta a. Now delta a by 10 is equal to LCM 10, so plus or minus 0.2 into 5 plus or minus 0.5 into 2, okay, so that is 10 1, so 1 plus 1 that is 2, so that is here 1 plus or minus 1 plus 1 by 10, finally 2 by 10, okay. Now 10 cancel, so finally delta a, so delta a is equal to 2. This is your answer. All of you got it? वो जहाँ बुझेली एठी केवल ए जो जिनसुडा कल सॉल्व कली तो बड़ा नोट करिवो मु तापर यार जस्ट हियर समयटा कहि दिबे जे व्हाट यू गॉट. सो आफ्टर दिस आफ्टर ऑल फाइनली यू गॉट व्हाट, delta a by 10 and delta, so you finally got what expression, that is equal to what, the delta a is equal to what, that is delta a by a is equal to delta l by l plus delta b by b. This is the procedure. Now delta a how much we don't know, a that is 10, delta l that is plus or minus 0.5 by 5 plus or minus 0.2 by b, that is only 2, okay. Now that is equal to delta a by 10, you can get it LCM 10, that is 1 plus 1, that is 2 by 10, understood? So delta a by 10 is equal to what, that is equal to 2 by 10. So when 2 by 10 you can get, that is equal to delta a by 10 is equal to 2 by 10. So finally delta a is equal to 2. That means if length increased or decreased 0.5, जदि लेंथ एरर है प्लस माइनस 0.5, ब्रेथ एरर है प्लस माइनस 0.2, ताले एरिया केते एरर देखेबो ना प्लस माइनस 2. सो डेल्टा ए इज therefore delta a is plus or minus 2, okay. So this value is delta a, okay. Now the area a plus delta a, okay, a plus delta a, that is equal to 10 plus or minus 2, a plus or minus delta a. Understood? I hope you understood this one. So देखो आमे एटा कौन करछे एठी मु गोटी तो क्वेश्चन कहली बेसी कहली गोटे प्रॉब्लम सॉल्व करली, तो या भीतर बहुत टाइम कम रहउछि, तो टाइम कम भीतर यूट्यूब रे एक्चुअली मु प्रोफेशनल यूट्यूबर नुहे, तो लॉकडाउन समय किछि टाइम पास करिया पई किछि टिप्स गोटे वीडियो मु छाड़े, तो किछि पिलांकर रिक्वेस्ट अछि जोटा कि साने थरे बुझेले एथर भूली जाउछन्ती मन पड़ुनी, सेथिबे ताको जस्ट आउथरे रिमाइंड करिया पई गोटे वीडियो मु रेकॉर्डिंग करी पठाए, ओके. तो या भीतर कोन ना सेल्फ इंटरेस्ट आसुची, बेले बेले आसुची, बेले बेले आसुनी, तो तुम मानको कहूँ मु आपण मानको रिक्वेस्ट होउची कोन ना मोर भी बहुत गुड़े वीडियो करने इच्छा होउची, किंतु कोन ना बहुत एटा बहुत कष्ट काम, जो माने यूट्यूब करथो दे नो वेरी वेल, ओके. दिस इज वेरी डिफिकल्ट जॉब, कारण मोर सेमती किछि अरेंजमेंट नाही यूट्यूब करिया पई, आउ ता भितर मु प्रोफेशनल नले ऑफलाइन पढ़िया लोक, तो ऑनलाइन रे भी पढ़िया भी डिफिकल्ट होउची, ओके. सो आई हैव सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, ओके.
So please you just cooperate me for this and help me. What you just like, subscribe and also share these videos. जब एटा आपन को सतरे भल लगिला बा बुझी पारला किछि ताले आम आपन को बा तुम मान को आम तो गुरु दक्षिण भाव ये तीन जिन मागे कौन गोटे लाइक कर गोटे शेयर कर गोटे सब्सक्राइब कर है तो ये दरकार एतिकले काफी मुझे बहुत इंटरेस्ट लगे आउ पढ़ाई इच्छा हम है कि बहुत पैसा लोग कमाऊँ यूट्यूब रे मतलब सही प्रोफेशन जस्ट गोटे भल लगे कौन ना तीन टा मोर दरकार गुरु दक्षिण सतरे यदि तुम बुझी जाइछ बा ये कथा जानीपारछ बा मोर आउ किछटा वीडियो अच्छी जो भी वीडियो ठीक सब वीडियो तो करी होनी भलरे एकदम जमती करिया कथा सेमती करी होनी सब जिन एक्सप्लेन करी होनी ओके कारण यहाँ प्रोफेशनली कले गोटा सिस्टम अलग आसो प्रोफेशनली करी होनी तो मो हिसाब से जी अरेंजमेंट मो पाखे अच्छी नहीं मुझे बुझिपारे तो से हिसाब से तुमको मोर गोटे रिक्वेस्ट तुम गोटे सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर आउ गोटे वीडियो मजे मजे कराव है तो डाउट जब किसी अच्छी बेले पचार पार ओके दिस इज स्पेशल रिक्वेस्ट ओके थैंक यू।